Hello and welcome everyone to the second edition of French Balayage Bootcamp from L'Oreal Professional. This is Pradeep Dhananjayan, Senior Manager Education at L'Oreal. Thank you so much for joining us today. This edition of French Balayage Bootcamp is perfect for intermediate and advanced level learners to improve your skills and techniques on French balayage creation and color combinations with beautiful toning techniques. This will help you to build your business and skills and establish and maintain your lead as a French balayage expert and salon in the industry. So I hope you are ready. Let's get to it. So first thing first, do remember to type in all your questions, your doubts in the chat box. Our team will be replying to it at the end of the day. So the most important thing, let's talk about the product. So ladies and gentlemen, we are super happy and proud to announce the arrival of the new baby at home, a baby that can grow into a giant and help you build enormous volume of business and reputation. So it is my pleasure to introduce to you the new multi-technique Nyan with bonder inside. So this range is specifically formulated to give you superior lift, superior protection with more bonder inside, and also a faster lightning speed, which means you will be able to save at least 15 minutes of your total processing time of the pre-lightning process, which is a lot when it comes to you doing a lengthy balayage service. Okay, and what more? An innovative set of oxidants enriched with oil for the first time to give you maximum protection, smoothness in application, and efficacy when it comes to your service. So we have the all-new oil developers, first time in the industry when it comes to a pre-lightning procedure. Okay, this combination will ensure your hair is lighter, faster, and also thoroughly protected. So you don't need to worry between the condition of the hair and the lightening ever again. So we have two oxidants coming in this family. We have 20 volume and we have a 30 volume. So your balayage service in the salon has got a big boost to provide with something that your customers are really looking forward to. An amazing French balayage with an amazing condition in the hair. So I know that seeing is believing. So we're going to get to the technique very soon. But all of you know a lot of things can happen when you do a French balayage. Okay, sometimes your application can take very long. Sometimes your undercoats can become quite uneven. It can be lighter at the back and maybe medium at the front and quite dark at the top. So why does it happen? Or what can we do to actually control this in a better way? So today's learning is basically about giving you a lot of tips, methods, techniques, and system in achieving a French balayage more perfectly and with ease. So we're going to demonstrate to you 3 techniques today of French balayage, which you can take away to give your clients something different, something better. And along with that, 3 color combination techniques which you have never done before. And at the same time, a different way of toning the hair to print the perfect French balayage picture onto the hair. So time has come for me to demonstrate to you the very first technique of French balayage. So let's get to it. All right, like I said, the very first thing in a French balayage is that sometimes your undercoat, or most of the time, your undercoats are little uneven compared with the first section that you started, because the first section you started will always have the most lighter effect.
So why does it happen? So it happens simply because probably we are taking too many sections and we are working in a very, very old-fashioned way. So today, I'm going to demonstrate to you something that you can take away and quickly implement in your salon to get much, much faster result and not much difference between your left side and right side or the sides at the back. Okay, for that, I'm going to let go my traditional way of 4-section balayaging into just 2 sections, and that itself will help you save enormous amount of time. All right? So for this technique, which you can see in your on your screen, so you have a section that is starting right at the back of the head. There are 2 sections which are being taken at the back of the head. Then the next thing what is happening is that there is no parting which is dividing the head into 2 sections. A parting that is starting from, or a section that is starting from the front hairline to the back of the head, touching almost 1 inch away from the ear. So now I'm going to continue exactly same, building up my technique all the way up. But when I do the technique, what I'm going to do is that I'm going to create a lot of softness in my French balayage by changing the way that I'm doing the process, or maybe the application method. And this is something that you can adapt in your salons to get far better seamless effect into the hair. So the trick is playing around with 2 different oxidants. Instead of using only a single developer to print your beautiful balayage, today we are going to learn about how we can do this with 2 different oxidants. All right, so for my technique, I've taken multi-technique 9 and 1 bowl with 20 volume and another bowl with 30 volume. All right, so I have my multi-technique 9, okay, taken with oil developer 20 volume in 1 bowl and another scoop of multi-technique 9 with oil developer 30 volume. Right, so here I have my 20 volume. So you can see the oxidant is no more water-based. The oxidant is oil-based, which is actually allowing me to create a very nice creamy consistency. So what are the benefits? Number 1, I get far more connection with the hair when I apply the product. Because of the oil base, it allows me to nicely paste it onto the hair without having that drippy effect. So as you can see, my multi-technique 9 with bonder inside and oil-based oxidant has transformed into a nice rich paste. So in the quickest possible time. So that's my 20 volume. Okay, very important to not to use the brush which you actually use for mixing to apply on the hair. So this is my multi-technique 9 with 30 volume. So again, very easy to mix, very smooth texture when I'm mixing it, and I don't need to wait for even few seconds to allow the powder to get into a paste form. Immediately after mixing itself, it turns into a beautiful paste form. Right. So product is mixed. So the first developer that I'm going to keep to my side is the 30 volume. Thank you. Right. Now, what is the secret of application? How to get that seamless effect? You know, when I was training people over the past few years, I realized that even though a lot of people are doing balayage, somewhere they are not
getting the 100% effectiveness when it comes to creating the seamless finish. So we've been thinking about a lot about what can be done to bring that seamless feel. So the very first thing what I'm going to do is that I'm going to take my section, which is a 1.5 centimeter thick section. Again, from the front of the head, going straight to the back, helping me save a lot of time and also helping me to get a lot more control. So here I take my slice. I take my slice, and what am I going to do first? Normally, we just start applying, or we leave a little bit of hair. So here, first thing what I'm going to do is that I'm going to take a quick, fine baby lights from my slice, and then I'm going to clip it up. Right. Once that's done, I take my 30 volume just at the tip of my brush and start applying, holding the hair maybe halfway down, and start gently applying the product in a diagonal way upwards. Right? So I create that softness with my 30 volume, bring the product a little bit down. Okay, I'm so sorry, gloves. This is super important, wearing gloves. Right, so what am I going to do next? It's a trick that you can also try and practice in your salon. So I take my section, and with my little finger, I gently push the product forward just to create that blend, and then gently drop it and bring my baby lights back down and hold it from halfway up. So earlier, and I take my 20 volume. So this time, I've changed the oxidant from 30 volume to 20 volume, and from my halfway up, with a cleaner brush, I start putting my product upwards and in a much steeper angle. So bring this down a little bit to create that softness. Gently run my finger upwards to create that seamless effect. And then I'm going to grab my 30 volume section, keep it together, and then just gently connect it at the midway point. And after that, I will go back to my 30 volume and start applying much heavier concentration of the product. Okay, once this is done, gently run my finger through to kind of saturate it very, very softly. And then you can see here the softness of 20 volume getting into the softness of 30 volume, and then the heaviness of 30 volume. So this transition will help you avoid that bright block visibility that happens when you actually work with heavy hands. Okay, having done this, I'm going to stick a foil right underneath to my section by placing it right at the center. Right, I'm going to close this foil.
Right. So that's my packet 1. So I'm going to repeat that again for you. Again, my second section, which is halfway above the ear and going to the back of the head. Okay. So I'm taking my baby lights section, clipping it gently up, taking my bottom section, which is for my stronger lift, then gently applying from little halfway down, going softly up. तो अगर आप इसमें देखेगा तो मेरा 30 वॉल्यूम का जो एप्लीकेशन है वो एकदम स्टीप ऊपर नहीं जाता है, उसको हम थोड़ा कम एंगल में ऊपर लेके जाता है, बिकॉज हमारा जो 20 वॉल्यूम का जो लिफ्ट है वो हमको मैक्सिमम हायर पॉइंट से हमको मिलने का है. सो 30 वॉल्यूम एंड देन द बेबी लाइट्स पीस बेसिकली ब्रिंगिंग इट डाउन. ओके, हाफ वे. तो इसमें जो टेक्निक है उसमें आपको ब्रश को क्लीन रखना बहुत जरूरी है. ओके, नॉट टू मच ऑफ प्रोडक्ट. सो इसमें जो एप्लीकेशन है वो मैक्सिमम एंगल पे, स्टीप एंगल, इट गोज टिल द टॉप. बट रिमेंबर, जब भी आप ये एप्लीकेशन करोगे हेड का जो कर्व है उसके ऊपर नहीं लेके जाने का. सो देन इट विल लुक लाइक अ हाईलाइट. सो ब्रिंगिंग इट बोथ टुगेदर, just connecting the midway, and then 30 volume. Now more heavy application. Okay, so once I apply the product with my fingers, I gently emulsify the ends. Okay, and using the little finger, I blend it nicely. Right? So you can see the application is not heavily saturated everywhere, leaving the ends of the hair. Yeah, so you have your 20 volume softly applied, 30 volume softly applied, getting into 30 volume more heavily, and both upside down. So again, foil placement. अगर आपको ओपन एयर टेक्निक करना है, so then you can keep the sections open, but in that case you would rather apply more product into the hair. Right? Quickly cleaning my hands, then going on to the next one. Okay, here. What is my next section? My section is going to be again a diagonal section, but starting from the front hairline straight to the back of the head. Okay, at least 1.5 centimeter thick. अगर मैं बहुत थिन सेक्शन लेगा तो क्या होगा, मुझे काफी स्ट्रॉन्ग इफेक्ट मिलेगा. सो इसीलिए मेरा सेक्शन का साइज मैं 1 और 1.5 सेंटीमीटर थिक साइज में लिया है. सो अगेन टेकिंग अ थिन स्लाइस. जैसा ऊपर जाओगे आपका स्लाइस का साइज थोड़ा छोटा करना काफी जरूरी है. ओके, अगेन वीविंग. अगर आप ये बेबी लाइट्स देगा तो मैं उसको रूट से ले रहा हूं. ओके, आई एम नॉट टेकिंग द बेबी लाइट्स फ्रॉम द mid point. Okay, clipping. So I get something like a weave, but a slice weave, not really a slice, not really a weave. Halfway down, once again, 30 volume. Remove the excess product from the brush using a sweeping action, and then gently blend it upwards, and using your little finger
you just blend the 30 volume up. Okay, I'm not putting any heavy concentration here. Now drop it down, bring my baby light weaves, and then again brush without so much of product, halfway holding upwards application but more steeper angle. Okay, gently connecting, and then together, just blend it at the midway point. And now for more visibility, 30 volume. Very gently, okay? Just making sure that you're getting a beautiful lift, not highly different lift all over. But the softness near the root is absolutely guaranteed with this technique. Okay, so while I'm going to continue with this technique, I have something very, very important to tell you. अगर आपको बालयाश एकदम ब्यूटीफुल मिलना है तो आपको बालयाश का बैकड्रॉप भी बहुत ब्यूटीफुल होना जरूरी है. ओके, तो ऐसा नहीं कि आप कुछ भी टोन डिसाइड करेगा ग्लोबल के लिए और कुछ भी टोन डिसाइड करेगा बालयाश के लिए. ओके, देन इट ऑल लुक लाइक 3 different colors. Okay, so to put it together is very, very important. So your choice of global, your balayage, and the final toning is super crucial. So today we are going to share with you some super interesting techniques and tips through which you can actually create a perfect multi-tonal global result that will create the backdrop for an amazing balayage technique. So I would like to call on stage Asta Soni to give you those wisdom on how to achieve that perfect global coloration on the hair. Thank you, Asta. Over to you. So hello everyone. So आज मैं आपको ग्लोबल के इंसाइट्स दूंगी. ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट ग्लोबल, बालयाज में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, जैसा कि अभी सर ने बिल्कुल सही बोला कि जो बैकड्रॉप है उसमें भी थोड़ा नेचुरल टोन होना चाहिए, राइट? सो जनरली जब कभी भी हम लोग कंसल्टेशन करते हैं, ठीक है, सो हाउ डू वी डू कंसल्टेशन? सो कंसल्टेशन के दौरान हम अपना एप्लीकेशन स्टाइल माय हेयर प्रो की मदद से क्लाइंट के स्किन टोन के हिसाब से उनको एक शेड रेकमेंड करते हैं, राइट? आइडियली सैलून सिनेरियो में व्हाट वी एंड अप डूइंग इज कि जो भी एक शेड क्लाइंट का डिजायर्ड शेड है वो ही हम ओवरऑल हेड में अप्लाई करते हैं. जैसे फॉर एन एग्जांपल लेट्स से यहाँ पे मेरे क्लाइंट का डिजायर्ड शेड है 6.23. ओके, सो मैं क्या करूँगी, फटाफट से 6.23 लगा दूंगी. बट जब मैं सिर्फ 6.23 बालों के ऊपर इस्तेमाल कर रही हूँ तो व्हाट इज हैपनिंग इज कि एक ब्लॉक इफेक्ट क्रिएट हो रहा है. ठीक है, मुझे ओवरऑल हेयर में सिर्फ एक ही टोन, एक ही शेड देखने को मिल रहा है. नाउ हाउ आई कैन इम्प्रोवाइज मोर, मैं इस पे इम्प्रोवाइज किस तरीके से कर सकती हूँ, ठीक है, या फिर इसको bespoke पर्सनलाइज कैसे बना सकती हूँ अपने क्लाइंट के लिए, इज वाइल एडिंग अ टोन विच कॉम्प्लीमेंट्स माई डिजायर्ड शेड. ओके, कैसे? जैसे फॉर एन एग्जाम्पल लेट्स से कि मैंने एक सेक्शन पे अप्लाई किया 6.23 और दूसरे सेक्शन पे अप्लाई किया 6.32. सो क्या कर रही हूँ मैं मल्टी टोनल इफेक्ट क्रिएट कर रही हूँ, बिकॉज मैं अलग अलग टोन्स के साथ काम कर रही हूँ. लेकिन यहाँ पे टोन की स्पेशलिटी क्या है कि वो एक दूसरे के साथ बहुत ब्यूटिफुली ब्लेंड हो रहे हैं. ठीक है, सो इससे हमें बेनिफिट क्या मिलेगा? ऑब्वियसली जो आप सर्विस करोगे सैलून के अंदर वो काफ़ी पर्सनलाइज रहेगी.
अगर क्लाइंट को वापस से वही सेम कलरेशन करवाना है तो उसको आप ही के पास आना रहेगा, क्योंकि यू नो द रेसिपी, राइट? इसके अलावा अगेन जब क्लाइंट अपने बालों को, जैसे कि उनके बाल ड्राई होते हैं, तो नेचुरल मूवमेंट को ये मल्टी टोनल इफेक्ट कॉम्प्लीमेंट करेगा. सो नाउ अगेन मेरे पास बोल के अंदर आई हैव मिक्स 6.23 जो कि मेरे क्लाइंट का डिजायर्ड शेड था. ओके, सो आई एम क्विकली मिक्सिंग. ये जो 6.23 है, ये मैंने कौन सी फैमिली का सेलेक्ट किया है? दैट इज योर इनोवा. The beautiful part about Innova is a lot of shine, cosmeticity and smooth texture while applying the product. So again, यहाँ पे मैंने 6.23 को कौन से डेवलपर के साथ में मिक्स किया है? I have used rich oxidant 20 volume. Okay, now I will be mixing my 6.32 again with 20 volume. So अगर आपने यहाँ पे नोटिस किया हो, मैं दोनों ही बार 20 वॉल्यूम का इस्तेमाल कर रही हूँ, विच मीन्स कि क्या, मुझे अपना लेवल चेंज नहीं करना है, ठीक है, सिर्फ उसके अंदर एक टोन या एक मल्टी टोनल इफेक्ट ऐड करना है. ओके, सो वंस आई एम डन विद मिक्सिंग, आई एम गोना क्लीन माई ब्रश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ बिफोर स्टार्टिंग, a very or a must use product is your metal dx pre-treatment spray. ओके, बिना भूले आपको इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को अप्लाई करना है हेयर के ऊपर. एंड एज वी ऑल नो कि इसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, जैसे कि क्या, ये आपके 87% ब्रेकेज को रिड्यूस करेगा एंड 100% रिलायबल कलर रिजल्ट देगा. इवन ये आपके मेटल मॉलिक्यूल्स को भी डिटॉक्स करेगा. सो आई एम टेकिंग सेक्शन. मैं क्या कर रही हूँ, सबसे पहले आई विल स्टार्ट द एप्लीकेशन from ends going towards my midst and then emulsifying the product. So आप metal DX pre-treatment की मदद से overall hair को prepare करोगे सबसे पहले. Once you are done with that, you will mix the product. Okay? Now अभी मुझे क्या करना है, global color की application के time पे, I hope everybody can see it very clearly. Yes? Perfect. सो ग्लोबल कलर, क्योंकि मैं दो अलग अलग शेड यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ, सो मैं क्या करूँगी, 1 सेंटीमीटर का सेक्शन लूँगी. ओके, 1 सेंटीमीटर सेक्शन लेने के बाद में सबसे पहले मैं अपना डिजायर्ड शेड 6.23 20 वॉल्यूम के साथ यहाँ पे अप्लाई करूँगी. अगेन आप यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व कीजिएगा कि सबसे पहले मैं मिड से लगा के धीरे धीरे रूट्स पे जा रही हूँ. The reason behind is कि मुझे रूट्स पे थोड़ा सा सॉफ्टनेस चाहिए, going into more lighter ends, just to complement my balayage. Okay, once I'm done with it, I'm gonna comb and I'll be applying the product on mid-lengths and ends. Again, because it is Innova, make sure that you apply the product really very nicely and emulsify it through. So meanwhile, would you like to add on anything? Yeah, thank you, Astha. So, अगर आपने मेरा नेक्स्ट सेक्शन देखा, ये जो सेक्शन है, ये हमारा सेंटर प्रोफाइल जो सेक्शन है, हेड को जो 2 इक्वल साइज में जो डिवाइड करता है, वो सेक्शन का बेस में मैंने ये सेक्शन को लिया है. ओके, नाउ इसमें क्या इंपॉर्टेंस है, ये जो सेक्शन है, इसमें जो आप प्लेस जो कर रहा है जो पीस, ये आपको एक मनी पीस का इफेक्ट देगा, बट नॉट समथिंग स्टार्टिंग right from the root, maybe an inch away from the root, right? So a lot of times we spend a lot of energy on creating money piece, and a lot of people get it right, some people don't get it right. So this is a quick way to add a money piece when you actually work your way up with your balayage without taking a separate section altogether. So I can go higher as I want, I can also keep it slightly lower. So remember, but whenever you do French balayage, make sure the turn of the head, okay, you shall not go beyond that. If you go beyond that, what happens? It looks like more like a very
strong root application. Okay, you start losing the balance of the French balayage, right? So again, very softly blending the products through to the ends. Yeah, a lot of us say that we don't have the balayage board, but I can tell you there are hundreds of ways to do the technique without using a balayage board. And here you see, most of the time my foils did not fall. Why did it happen? Okay, simple thing, whenever you place a foil, make sure that the hair is at the center of the foil. So it helps you to actually manage the dropping of the foil most of the time, because it balances the weight so much better. So everything is an education in a balayage application. And also, when I'm putting the foil, I'm using my comb downwards, okay, not this way, but downwards to lock the foil. So it's so much better and so much less cumbersome when you actually follow a certain methods in your application. So you get the peace of mind and the control over your application to get more easier result and more balanced result. So you saw I have been applying from back to front at a shot, right? So what is the benefit? The lift that I'm going to get is very even. The back and the front is managed. And I'm starting from the front because I want to create more lightness, because French balayage is something where people want to see the print of balayage, okay, majorly at the front rather than the back. So what if you have a lot of light sections at the back and very orangey looking hair at the front, right? That can strike a not so great balance, okay, when it comes to getting that perfect lift. So I'm continuing to my sections at the back, but I'm going to show you how I'm going to do the top section, which is actually also very important. But let's hear from Asta, what are the combinations that we can play around when it comes to using an iridescent family reflect. Okay, so guys, जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि मैंने 6.23 और 6.32 के साथ में यूजिंग 20 वॉल्यूम मैंने अपना एप्लीकेशन यहाँ पे कंप्लीट किया है, ठीक है. अगेन सेक्शन मैंने कैसे लिए हैं, हॉरिजॉन्टली मैंने सेक्शन को प्लेस किया है, ठीक है. सेक्शन का साइज कितना है, इट इज़ 1 सेंटीमीटर, नॉट मोर देन दैट. ओके, नाउ यहाँ पे 1 सेंटीमीटर सेक्शन मैंने क्यों लिया, एंड जो मैंने ये मल्टी टोनल इफेक्ट क्रिएट किया है वो मेरे बालायाज को किस तरीके से कॉम्प्लीमेंट करेगा, वो कुछ इस तरीके से, जैसे कि आपने जो 2 हॉरिजॉन्टल सेक्शंस यहाँ पे लिए हैं, ठीक है. आपका बालायाज आप सेक्शन कैसे निकालोगे, यू विल बी टेकिंग अ डायगोनल सेक्शन, राइट. जब आप डायगोनल सेक्शन लोगे तो वो दोनों कलर के बीच में से होता हुआ जाएगा. सो वंस यू विल स्टाइल द हेयर यू विल सी द टोनर दैट यू हैव पुट, ठीक है, एंड द मल्टी टोनल इफेक्ट दैट यू हैव क्रिएटेड ड्यूरिंग योर ग्लोबल. अभी बात ये है कि ठीक है मैंने 6.23 मिक्स किया, ठीक है, 20 के साथ में, 20 वॉल्यूम के साथ में 6.32 लिया, लेकिन ये दोनों ही शेड मैंने क्यों सेलेक्ट करे. सो मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाहूँगी कि मैं किस तरीके से अपने शेड का सिलेक्शन करती हूँ. सो अगेन एक एप्लीकेशन जो कि मेरा काम काफ़ी आसान बनाता है, ठीक है, एंड दैट इज़ अ मस्ट टू यूज़ एज अ प्रोफेशनल आर्टिस्ट, दैट इज़ योर स्टाइल माई हेयर प्रो. जब आप स्टाइल माई हेयर प्रो पे जाते हो आपके पास एक ऑप्शन होता है, दैट इज योर स्वॉच बुक ऑप्शन. आप इस स्वॉच बुक ऑप्शन पे क्लिक करोगे एंड अगर आप देखो ऊपर ही ऊपर आपको एक ऑप्शन दिखा रहा है ऑल करके, यू विल क्लिक ऑन ऑल. एंड जैसा मैंने अभी आपको बताया कि मेरा जो शेड था डिजायर शेड क्लाइंट का, दैट वाज 6.23. आई होप एवरीबडी कैन सी द शेड 6.23. तो 6.23 अभी रखना दिमाग में, ठीक है. अब देखो मैं आपको दिखा रही हूँ 6.32. ओके, सो अगर आपने देखा हो इन दोनों शेड का ब्यूटी क्या है कि दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ब्यूटीफुली ब्लेंड हो रहे हैं. बट लेट्स से कि मुझे नहीं यूज़ करना 6.32 या 6.23, मेरे क्लाइंट का डिजायर शेड कुछ और है. जैसे लेट्स से मेरे क्लाइंट का डिजायर शेड है 5.25, तो आई कैन ऑल्टरनेट इट यूजिंग 5.15. ऐसे आपके मेन स्क्रीन के ऊपर कुछ और भी ऑप्शंस पॉपअप हो रहे हैं. आई विल क्विकली ब्रीफ.
जैसे फॉर एन एग्जाम्पल क्लाइंट का डिजायर शेड अगर 5.25 है, यू कैन यूज 5.52 in terms of creating multi-tonal effect. Again, 5.32, okay? Again, you can complement it using your 5.35. The last option over there is 6.23 that can be complemented using your 6.24. एक चीज जो ध्यान रखना वो ये कि हम लोग डेवलपर्स के साथ यहाँ पे प्ले नहीं कर रहे हैं. वी आर जस्ट वर्किंग ऑन द सेम लेवल बट डिफरेंट टोन्स. ओके, so over to you, sir. Thank you. So this is a very, very important part in French balayage. How do we, जब हम ऊपर का सेक्शन पहुंच जाओगे, तब हम कैसे एप्लीकेशन करें. So जब हम ऊपर का सेक्शन पहुंच जाओगे, तब हमको दो ट्रायंगल्स मिलेगा. Okay, as you can see on the screen, you have a section, a triangular section at the top, and you get a triangular section at the back of the head. Okay. So this section, how do you apply? You continue taking diagonal sections. Okay, मगर अभी धीरे धीरे फ्रंट हेयरलाइन से वो 1 centimeter, 1.5 centimeter sections अंदर आना शुरू हो जाएगा. Okay, likewise. And then here you take your soft slice. See, the slice is getting smaller and softer, and then you do your fine baby lights on the top, and after which your multi with 30. Gently bringing the product down, followed by, okay, with the brush itself, you can create a little bit of softness with the product, and then go up. Yep, keep it separate. Bring your baby lights down, and 20. But from midway up. So creating that ultra softness near the root, or maybe close to the root. Right, and then bringing all the sections together, blending it at the bottom of it, and then you switch to your 30 volume with a heavier concentration of product. Okay, so meanwhile, sir, I would like to add on. Sure. So अभी मेरा ग्लोबल एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया है, ठीक है. ग्लोबल एप्लीकेशन के बाद में आप प्रोसेसिंग टाइम का वेट करेंगे. जैसे आपका प्रोडक्ट प्रोसेस हो चुका है, डेवलप हो चुका है, आप प्रोडक्ट को रिंस करेंगे, एंड रिंस करने के बाद में आप कौन सा शैम्पू इस्तेमाल करेंगे? यू विल बी यूजिंग योर मेटल DX शैम्पू. ओके, अगेन शैम्पू करने के बाद में व्हाट यू विल डू? यू विल टेक द क्लाइंट बैक टू द वर्क स्टेशन, ठीक है. आप प्रॉपर टॉवल ड्राई करेंगे, 100% ड्राई करेंगे हेयर को, एंड देन यू विल प्रेप द हेयर फॉर ब्यूटीफुल बालायाज. ओके, जैसा कि अभी आपने अभी सर आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से आपको एप्लीकेशन करनी है बालायाज की. अगर आपको सेम टेक्निक से सेम रिजल्ट चाहिए तो आप यही एप्लीकेशन टेक्निक फॉलो करेंगे. ओके, सो ओवर टू यू सर. Yeah. So this is the last section at the top. Okay. So ये section में भी आप exactly same. You take a slice, and then you weave, and you apply the product. Okay, weave and slice, you apply the product. Okay, but here is an option also for you. If you take the last section, which is, let's say, a little away, you can actually take into baby lights, right? And then a very, very thin slice if you don't want to create a heavier feel on the top. Okay, but what I'm going to demonstrate to you right now, because you have seen this happening
Okay, so in the interest of time, we know that you are busy. So what I'm going to do is that I'm going to show you how this technique is done at the back of the head. Okay, to do this at the back of the head, जब आप ये सेक्शन लेके ऊपर जाओगे आपको एक ट्रायंगल सेक्शन मिलेगा. ओके, ये ट्रायंगल सेक्शन में आपको इस साइड में आपको एक कॉर्नर मिलेगा, इस साइड में भी आपको एक कॉर्नर मिलेगा. सो टेक इट टुगेदर एज वन सेक्शन. Okay, then divide this into smaller sections and start weaving and slicing. So I'm going to show you. So you continue with your application 1, you continue with your application 2, and the last section I'm going to demonstrate you here. Okay, you take your thin section. Okay, this will be your last section for balayage placement. So baby lights. So remember, I am actually applying it from the farthest possible. Now, the difference in application at the back section is that, okay, you are not going to do a 1-point application, you will be doing a 2-point application, which is you start at the center and then you gradually go up, and then again from the center you gradually go up. Can everybody see this? Should I turn it a little bit? This way? Better? Right. Okay, so I start from the center and I gently go up, and I start from the center and I gently go up. Okay, so this is my 30 volume, and again very gently lift it upward. You see, I'm not going very, very close to the root with the concentration, right? And then I bring my baby lights back down, and here again center up with much more softness and control, and center up with much more softness and control. And having done that, again I'm going to blend it upwards to get that seamless effect and smoothness into my application. So taking it together, okay, blend it at the midpoint, and then heavier concentration of product to get a superior lift. And then gently emulsifying it through yep. So that's how we achieve that 2-point balayage at the back of the head. Right? So we started from the point of the triangle, 1, 2, 3. This is my last section. So everything diagonal, okay, starting from the front towards the back, okay, but at the back, when you come to the triangle, जब आपको center में triangle मिलेगा, तब आपको उसमें horizontal sections लेने का है, but not any more of diagonal sections. So this way you will achieve a perfect balance of technique. Yeah, some people press it too much, not necessary, because if you press it too much, you remove the product from the hair, so you get patchy lift in certain areas. So this is how the technique is applied. I hope you liked it. Would you like to add something about the toning? Yes, definitely. So now we are done with our global. We are also done with our balayage. ठीक है? अब आपके balayage को complement करने के लिए you will be doing toning. Toning हम किसके साथ करेंगे? Toning will be our favorite Dia light. Okay? So when I talk about toning here, यहाँ पे toning के लिए again मैंने 2 shades का इस्तेमाल किया है, because हमारा overall objective क्या था?
कि हम रूट्स को थोड़ा डीपर रखें, गोइंग इनटू लाइटर एंड्स, ओके, जिसकी वजह से रूट्स पे हम लोगों ने इस्तेमाल किया है 6.28 विद 9 वॉल्यूम, ओके, एंड ऑन मिड लेंस एंड एंड्स वी हैव mixed 8.28 again with 9 volume. So with the help of एप्लीकेटर की मदद से मैं दोनों शेड्स की एप्लीकेशन करूंगी. सबसे पहले what I'm going to do, I'll take a section, okay, make sure कि आपकी एप्लीकेशन हमेशा ड्राई हेयर के ऊपर हो, ठीक है. अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, रूट्स पे प्रोडक्ट लगा के, ओके, उसको थोड़ा इमल्सिफाई कर रही हूँ. आई एम कोम्बिंग द प्रोडक्ट एंड मैं थोड़ा सा उसको नीचे की तरफ स्ट्रेच कर रही हूँ, ठीक है. आई एम अप्लाइंग, इमल्सिफाइंग एंड आई एम स्ट्रेचिंग द प्रोडक्ट लाइक दिस. स्कूप कैसे निकालते हैं अपन, आपने कोम अंदर डाला एंड देन मिडवे से यू विल टेक इट बैक, ओके. सो लाइक दिस, सेक्शन बाय सेक्शन. सबसे पहले मैं रूट्स पे 6.28 डियालाइट विद 9 वॉल्यूम की एप्लीकेशन करूंगी. अगेन ये एप्लीकेटर, दिस इज समथिंग विच इज देयर टू मेक योर वर्क मच मोर इजियर. अगेन आई हैव अप्लाइड एंड comb it through, okay. So like this, आप ऐसे ही सेक्शन बाय सेक्शन सबसे पहले रूट्स पे लगाएंगे, उसको थोड़ा नीचे तक स्ट्रेच करेंगे, कोम करेंगे एंड देन जैसे आपका रूट्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में आप सेकेंड एप्लीकेशन करेंगे मिड लेंस एंड एंड्स पे. अगेन मिड लेंस एंड एंड्स में एक बार कोम करने के बाद में मैं 8.28 की एप्लीकेशन करूंगी, ओके. 8.28 की एप्लीकेशन करने के बाद में यू विल इमल्सिफाई द प्रोडक्ट नाइसली एंड ब्लेंड बोथ द प्रोडक्ट्स टुगेदर. कोम इट वंस अगेन एंड लीव इट. गो ऑन योर अनदर सेक्शन, second section, apply 8.28, emulsify, comb it through once and you can leave the hair. Now once you are done with overall application, जैसे आपकी overall application complete हो जाएगी, उसके बाद again डेवलपमेंट टाइम आपको ध्यान रखना है. डेवलपमेंट टाइम क्या है डिया लाइट का, दैट इज योर 20 मिनट्स. 20 मिनट्स का डेवलपमेंट टाइम कंप्लीट होने के बाद में आप क्लाइंट को बैक वॉश पे लेके जाएंगे, प्रोडक्ट को रिंस करेंगे और प्रोडक्ट को रिंस करने के बाद अगेन डू नॉट फॉरगेट गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू यूज मेटल डीएक्स शैम्पू. ध्यान रखना प्री ट्रीटमेंट स्टार्टिंग ऑफ द सर्विस में इस्तेमाल किया गया है एंड बीच में जितनी भी बार हम शैम्पू कर रहे हैं हम मेटल डीएक्स के शैम्पू की मदद से ही शैम्पू कर रहे हैं. Once you are done with your shampoo, you will apply your Metal DX mask or conditioner as per hair type, okay. Once you are done with that, make sure that you comb the hair nicely, okay. And after that, you will also be treating the hair using your Vitamino Color Acidic Sealer, okay. Acidic Sealer की application towel dry hair पे आपको करनी है, back wash के ऊपर section by section, emulsify, comb it through. Okay, very quick and very easy way to complete your beautiful French balayage, that is 2.0. So sir, over to you. Thank you, Asta. Amazingly explained. So now is a time for us to see what we have demonstrated to you here on the dummy head, how it looks on a natural hair. Okay, so can I have my model Shreya on stage? Okay. So जैसा कि अभी आप श्रेया पे देख सकते हैं, she is carrying a beautiful hair color, okay. So इस beautiful hair color को हम लोगों ने किस तरीके से execute किया है? So जैसा कि हमने आपको बताया, global के लिए we have used 6.23 and 6.32 with 20 volume. Again section by section, taking horizontal sections. Once we were done with it, we have done balayage using the same technique जो कि सर ने अभी आपको यहाँ पे demonstrate करी. After that, हम लोगों ने toning किया है using 6.28 towards your roots, ठीक है. Again थोड़ा सा root stretch किया है using that scooping technique, ठीक है. And then mid lengths and ends पे we have done 8.28 with 9 volume. And then we have treat the hair using Metal DX shampoo mask and Vitamino Color Acidic Sealer. So Shreya, can you please show your hair color? So guys, that's it from Asta and myself, but we have something even more interesting coming in the second technique of French balayage. So I would like to call on stage
Mr. Soham Chavan and Janvi Patel. Thank you. Thank Stay you. tuned. Keep typing in your questions. I have a question for you. Okay, please let us know what you understood about Multi-Technique 9 and its USPs. So the right answers will be getting a beautiful styling range from L'Oreal Professional. So thank you so much. Soham, over to you. Thank you. सो हाय गाइस, जैसे कि आपने अभी एक फ्रेंच बालेज की टेक्निक देखी है, आई एम हियर टू डेमोन्स्ट्रेट सेकेंड टेक्निक ऑफ फ्रेंच बालेज। ये फ्रेंच बालेज करने के लिए आई हैव मिक्स्ड माय प्रोडक्ट मल्टी टेक्निक 9 बॉन्डर इनसाइड विथ 30 वॉल्यूम ऑयल डेवलपर। आई हैव मिक्स्ड इट, यू कैन सी हाउ क्रीमी इट इज़ टू अप्लाई ऑन दी हेयर। सेक्शनिंग पैटर्न की अगर मैं बात करूँ, आई हैव डन दिस 2 सेक्शंस एट द बैक। अगर आप देख सकते हो, इसके अंदर एक जो है वो मैंने स्लाइस किया हुआ है और एक जो है वो मैंने वीव किया हुआ है। दोनों के ऊपर आई हैव डन बालेज। नाउ व्हेन आई एम डूइंग साइड्स, एज प्रदीप सर सेड कि हमने 4 सेक्शंस में नहीं डिवाइड किया है हेयर को, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है अगर मैं 4 सेक्शंस करूँ। वी हैव ओनली डिवाइडेड हेयर इनटू 2 parts, that is your center profile parting, and I have divided into 2 parts. यहाँ पे अगर आप देखोगे, I have taken a diagonal section जो मेरा forehead से start हो रहा है, but diagonally it is coming back towards the nape, ठीक है, पीछे की तरफ आ रहा है पूरा section starting from the back. Now first section जो मुझे color के टाइम पे लेना है, that is a slice, but it is not a slice, but it is little bit triangular slice. So यहाँ से आप ध्यान से देखना कि I am putting my tail comb inside, I am going little bit deeper and then I am coming up. तो मेरा जो ये section होगा ये थोड़ा सा triangular होगा नीचे से, ठीक है। So I am going again, I am showing you, I am going little down and then moving my tail comb up and little bit triangular section, ठीक है। This will be my first section when I am doing my French balayage. I have to start it diagonally, ठीक है। So this section I will divide into 3 parts, जो मेरा first section है। now जो मेरा top वाला part है, I would say roots वाला part, that would be A, mids वाला part will be B and ends जो होंगे वो मेरे C होंगे, ठीक है। So I will start applying my pre-lightener first on B part. So I'll apply on B, I will start from B and slowly and gradually मुझे A की तरफ बढ़ना है। Please do not overload product on your brush, it should be only on your tip of the brush. Slowly go towards A. So if you can see, whenever my product is getting finished, जब भी मेरा product brush पे से ख़त्म हो रहा है, I am taking the product but I am not applying directly on the A, I am applying on the B and from B then I am going towards A. B से हमें हमेशा ऊपर की तरफ जाना है, बिकॉज अगर मैं डायरेक्टली प्रोडक्ट लेके यहाँ अप्लाई कर दूंगा तो ज़्यादा एप्लीकेशन हो जाएगा A पे एंड A वुड गेट मोर लाइटर, जो कि मुझे नहीं चाहिए। सो आई विल गो लिटिल अप, अप्लाइंग ऑन A इज डन। सो यू कैन सी यहाँ पे ये जो मेरा पार्ट है वो ऊपर है और यहाँ पे जो मेरा एप्लीकेशन है वो नीचे है। सो एप्लीकेशन में भी आई एम गोइंग डायगनल लाइक दिस, स्टार्टिंग फ्रॉम हियर एंड एंडिंग इट ओवर हियर। सो इसको अप्लाई करने के बाद नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज, मुझे इस प्रोडक्ट को सैचुरेट करना है सी पे। दैट मीन्स मुझे सबसे ज़्यादा जो मेरा प्रोडक्ट चाहिए है वो कौन से पार्ट में चाहिए है, सी पे चाहिए है सबसे
लास्ट में ऑन दी एंड्स। तो उसको अप्लाई करने के लिए आई एम यूजिंग अ बालेज बोर्ड टू सैचुरेट द प्रोडक्ट on C. Just use this and apply on the C part. Maximum product to get more lightness on the ends. Once you apply it, do not remove your board. Place your foil underneath. Foil को place करेंगे and I will drop my section over it, and then I will just stick the foil. I will take another foil, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, उसको प्लेस करेंगे, ठीक है। प्लीज़ बीच में जहाँ पे आपने लगाया हुआ है प्री लाइटनर सेक्शन के ऊपर, उसके ऊपर प्रेस मत करना, बिकॉज अंदर जो आपने प्री लाइटनर लगाया हुआ है दैट विल गेट smudged. Just lock it from both the sides. Now second section will be at the back of this section, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट सेक्शन हुआ, यहाँ पे इसके पीछे मेरा सेकेंड सेक्शन होगा। नाउ अगेन गोइंग लिटिल डाउन एंड कमिंग लिटिल अप, दैट विल बी माय सेकेंड सेक्शन, जो कि थोड़ा सा ट्रायंगुलर स्लाइस होगा। ग्रिप इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी हम लोग बालेज करते हैं, यू कांट पुट योर ग्रिप लाइक दिस विच इज़ लूज, आपको टाइट ग्रिप चाहिए होती है। सो प्लीज़ यूज़ योर थंब एंड योर इंडेक्स फिंगर टू हैव दिस ग्रिप एंड स्टार्ट अप्लाइंग फर्स्ट ऑन B part, slowly and gradually go towards A. Again, when you take fresh product on your brush, first apply on B. So I would like to add one tip over here. Whenever I do balayage, it is very, very important not to move your elbow. It should always be wrist movement, ठीक है, जिससे आपको बहुत अच्छा blending मिलता है और ज़्यादा seamless color आता है, ठीक है। So just how you hold your pen, pen को hold करना है and you have to use your wrist whenever you are doing balayage. Again, starting from B, going towards A, getting this diagonal shape. For saturation, take balayage board and apply on the ends, which are, yes, so more application on C. Place your foil underneath. On top one foil. इसको हमें अच्छे से लॉक करना है दोनों साइड से। So now I have to take my second section. Second section लेने के लिए I have to leave a 1 centimeter gap from this section. So starting from my forehead से I have to take a section going again back towards the nape area.
So once I take the section, rest here, I have to clip. Now इस सेक्शन के अंदर मुझे स्लाइसेस नहीं लेने हैं. इस सेक्शन के अंदर मुझे क्या करना है, आई हैव टू टेक वीव्स. बट जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊंगा वैसे वैसे जो मेरे वीव्स होंगे वो और थिन होते जाएंगे और पतले होते जाएंगे. सो आई विल स्टार्ट विथ लिटिल बिट थिकर, नॉट वेरी थिक वीव्स बट लिटिल बिट थिकर to show the visibility of my color, but as I go up my weaves will become thinner. So I will take a slice, and from this slice I will take weaves. So once I take the weave, start applying. सो ज़्यादा ऊपर हमें नहीं जाना है. नाउ अगर आप ध्यान से देखोगे इस सेक्शन को तो यहाँ पे ये जो स्टार्टिंग में जो मेरा प्री लाइटनर स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, दिस विल गिव मी इफेक्ट ऑफ मनी पीस कलर. अगर आपने इंस्टाग्राम पे देखा होगा आजकल जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, फ्रंट में जो कलर के पीसेस होते हैं, ठीक है. सो दिस विल गिव मी, तो उसके लिए आपको अलग से फ्रंट में ट्रायंगुलर सेक्शन नहीं निकालना पड़ेगा. बट अगर आप ऐसे भी करके यहाँ से आपका प्री लाइटनर स्टार्ट करते हो तो आपको ऑटोमेटिकली फ्रंट में मनी पीस दिखाई देगा. जस्ट गो टिल दी टॉप इन दी फ्रंट. यहाँ पे आप टॉप तक जाओ फॉर मनी पीस and apply on the rest hair. Saturation is very very important, नहीं तो आपके ends ज़्यादा लाइट नहीं होंगे. Place one foil underneath and cover the foil. यहाँ पे दो फॉइल्स हम लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं? वाई कांट वी यूज़ सिंगल फॉइल? कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताओ. अगर सिंगल फॉइल यूज़ करूँगा तो क्या हो जाएगा? व्हाट कैन हैपन? प्रेप में क्या होता है, हम लोग ग्लोबल कलर करते हैं. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डू अ ग्लोबल कलर ताकि आपके फ्रेंच बालेज के अंदर और आपके नेचुरल हेयर्स के अंदर ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट ना दिखे. तो टू गिव मोर इनसाइट्स अबाउट ग्लोबल कलर आई वुड लाइक टू कॉल जानवी ऑन स्टेज. Thank you so much, Soham. So as we saw that beautiful balayage technique, which is so practical to be done in the salon as well. Similarly, what is again important along with a good technique is your prep, which is your backdrop that you're creating, जो आप global के साथ करेंगे. Now, as we saw in the first technique, we are trying not to create a block looking effect with the global. हम multi-tonal effect create कर रहे हैं by using two different shades in the global alternatively, जो एक दूसरे को complement करेंगे, correct? Now, before of course I start with my global, what is very important is my pre-treatment, metal DX pre-treatment. So I will start from my ends, going higher. Now, अगर after I'm done with spraying my pre-treatment, मैंने जो कंसल्टेशन किया है मेरे क्लाइंट का using Style My Hair Pro app, she has chosen a shade which is a very good cool tone shade from the Majorel family, which is 7.1. Now again, as I said that हम वो block create नहीं करेंगे, we are
alternating it with a complementary shade. Now the shade हमने जो shade यहाँ पे choose किया है, that is on the same level, but we are adding another reflect, which is matte. So first shade, which is the desired shade, will be 7.1, and उसके साथ हम जो alternatively use करेंगे, that is 7.17, as you can see on the screen as well. So we are, now there are two rules when we do this, okay, which we cannot break. First being, हम जो level पे काम कर रहे हैं desired shade के साथ, my second shade also has to be on the same level. हम levels change नहीं कर सकते. Similarly, 7.1 chosen shade के साथ मैं जो developer use कर रही हूँ, that is 30 volume. So then 7.17 second shade के साथ भी मैं जो developer करूँगी has to be the same. It has to be 30 volume at the same time. So here I have my 7.1 mixed here. Now, अगर हम दो shades के साथ काम करते हैं, there is one thing I would like you all to take care of. That is कि आपके जो sections का width होगा, वो बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता है. I'm taking horizontal section, but at the same time बहुत thick sections नहीं ले सकते हैं. Reason being, we are using two different shades, correct? तो बहुत ज़्यादा blocky नहीं दिख सकता वो, अगर हम बहुत thick sections ले रहे हैं. So we'll make sure that it is not more than 1 centimeter. Now, I don't want a very high lift near the roots. So I'm using less product, moving downwards with a little more product. नीचे थोड़ा हम ज़्यादा product use करेंगे. At the same time, अगर आपके पास, you have a client जिनके roots में you have to do a gray coverage. You can always go back after finishing the midlines and ends, wait for 15 minutes. 15 minutes के बाद आप base color के साथ roots पे apply कर सकते हो आपका shade to get a perfect gray hair coverage on the roots. So I'm going to alternate my sections. First, मेरा desired था 7.1. Second will be, as we know, 7.17. Lightly on the roots. And हम जब नीचे pull through करेंगे, I'll make sure I'm pulling it while keeping my brush on a 45-degree angle for an even global saturation. Now again, placement is also very important क्योंकि हम stack नहीं कर सकते एक दूसरे के ऊपर. I'll keep it a little on the left ताकि वो blend ना हो. So till I finish this global alternating, I would want to ask Soham if you want to, explain. So once I am done with this section, ठीक है, जैसे मेरा top का section आएगा, what I have to do is I have to do baby lights, ठीक है, because there I can't put heavy weaves or I can't put heavy slicing because अगर मैं वो करता हूँ तो front में मुझे बहुत ज़्यादा कलर दिखाई देगा और क्राउन एरिया में बहुत ज़्यादा लाइटनेस ऐड हो जाएगा. सो वंस आई गेट दिस पार्ट जो कि मेरा टॉप का पार्ट है, व्हाट आई हैव टू डू इज एट द बैक फर्स्ट आई विल शो यू. I have to take a slice first at the back. Now इस slice के अंदर I have to do balayage. Now इसके अंदर जैसा मैंने front में balayage किया था, which was diagonal. The balayage was starting from top. Top से मेरा balayage start हो रहा था और वो नीचे आके finish हो रहा था. But यहाँ पे मैं पीछे diagonal balayage नहीं करूँगा. यहाँ पे मैं balayage जो करूँगा वो दोनों side से equal होगा. So first application on B part, going up,
and applying on A. Blending is very important. आप back brushing भी कर सकते हो, so you can do back brushing also to do the blending. You can use your finger also to do the blending. ठीक है? So just use your board to apply on the ends. Place the foil and lock it. You want to say something, Janvi? Yes, so now that you see that I have finished, मैंने मेरा front का application कर दिया है for my global, alternating again, taking 1 centimeter sections. Now यहाँ पे मैंने जो shades use करे as we spoke about it, 7.1 and 7.17, but it doesn't end there, right? We have ash family. There are multiple tones जिसके साथ आप combinations create कर सकते हो. Similarly, आपको screen पे भी दिखेगा. For example, let's talk about a few examples. फर्स्ट अगर आप लेवल 5 पे काम कर रहे हो, 5.1 इज योर डिजायर्ड शेड, 5.1 के साथ द शेड यू कैन ऑल्टरनेटिवली यूज इज 5.15 which is adding mahogany reflect. Second example on a level 7 if I want to talk about, which is 7.1 अगर मेरा desired shade होगा, the alternate shade will be 7.18 if you want to blend in a little mocha family with ash. So you can see more examples on your screen, of course. That is about my combinations. So हम over to you. Yeah. So अगर आप ये section देखोगे, ठीक है, जो मैंने लिया है, can see कि ये कितने छोटे weaves है, ठीक है. I'll just put my hand beneath so you can see that the weaves are very very small. So we call them baby lights, ताकि मेरा color जो है top के ऊपर बहुत ज़्यादा visible ना हो. Just apply very softly on top. Come towards the ends. Place the foil. And lock it. So it will reduce your time. Multi-technique 9. It lightens very fast. So आपका 15 minutes तक का time बच जाएगा whenever we lighten. So when I come in the front, which is my last section, I'll take one section. इसमें से I have to take a very very small baby lights. So balayage करने के बाद में what is the most important thing, guys? बालयाज करने के बाद में the most important thing is toning the hair. Toning is very important because जो भी हमें undercoat मिलता है वो बहुत warm होता है. उसको neutralize करने के लिए we tone the hair after balayage. So for toning, Janvi is here. She is going to explain कि how she is toning the hair. Yes, thank you. As you are seeing the balayage application, हम बालयाज में क्या क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं? वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ ग्रेडिएशन, करेक्ट? वी वांट अ ब्यूटीफुल सनकिस्ड लुक जो डार्क रूट्स से लेके लाइटर एंड्स तक मूव करे. सो विद द टोनर एज वेल, इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग वन सिंगल शेड रूट्स से एंड्स तक आप एक सिंगल शेड अप्लाई करो, उससे बेटर है
that you blend it in a way using two different tones, little darker on the roots and then blending it with a lighter shade on the midlands and ends. That is exactly what we are seeing today. So हम यहाँ पे जो कर रहे हैं for the toning purpose, the undercoat that I have achieved is on a level 7. For the undercoat that I have achieved is on a level 9. But then still at the same time, roots पे I'm going for a level which is darker, ताकि वो gradation मिले मुझे. So what I'm doing is a root shadow. The shades which I'm using for my toner are 7.12 for the roots. Here I have it mixed in my applicator bottle. So I'm going to go directly apply that on my roots. And then comb it through, emulsify it, comb it once. Do the same application for the entire roots of the head. So जैसे ही मेरा root application खत्म होगा, I will move forward for my midlands and ends. यहाँ पे I have to make sure that it is still the same level. अगर आप top of the eyebrow तक कर रहे हो, तो it has to be the same throughout. And once you are done with the roots, like how I'm done here, you will go forward and finish your midlands and ends. यहाँ पे 7.12 मैंने जो roots पे use किया है, उसके साथ I'm going to blend a 9.12 Dialite for the midlands and ends. Now make sure you blend both the shades together very well. Follow it throughout the head. There I go. Meanwhile, Soham, if you want to. Yeah. So I want to ask you guys that whenever you do toning, it is very, very important that we blending the roots what we have applied and what we have applying on the lens. It is very, very important. अगर आप वो कलर blend नहीं करोगे तो भी हो सकता है कि आपको कहीं पे demarcation दिखाई दे. So जो भी आप अप्लाई कर रहे हो टोनिंग के अंदर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस कलर को क्या करो, एक दूसरे में ब्लेंड इन करो. सो आई होप यू लाइक दिस टेक्निक. सो आई एम श्योर दैट यू मस्ट बी एक्साइटेड टू सी कि ये टेक्निक जो है वो क्लाइंट के ऊपर या फिर मॉडल के ऊपर जिस पे हमने किया है वो कैसे दिखेगी. सो नाउ आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन स्टेज माई मॉडल सलोनी, जिसके ऊपर हमने ये टेक्निक की हुई है. There you see the same balayage technique with the same toners. You see how the blend is so beautiful, yet you see that dimension in the hair, global mein, and of course in the balayage as well.
Saloni. So guys, don't go anywhere. We have one more super interesting French balayage technique. For that, I would like to call upon stage Anushka, who is going to demonstrate the French balayage technique. Thank you. Hello everyone. Firstly, thank you all for staying tuned into our today's live session. You guys have seen two amazing, beautiful French balayage techniques demonstrated live today to you all. Well, yet again, I have another French balayage technique that I am going to showcase to all of you. So let's quickly dive into seeing how do we do the next application. So here, with my next French balayage application, one thing I can promise is that it's a very easy technique and also simple at the same time. Demonstration के दौरान I am going to mainly focus upon कि इस technique को आप easily execute कैसे कर सकते हो. So first thing, आपके जो sectioning patterns रहेंगे वो काफ़ी simple आपको रखना है. You have to take a classic 4 section. ओके, क्लासिक 4 सेक्शन लेने के बाद हमारा एप्लीकेशन जो है हम लोग फ्रंट वाले सेक्शन से स्टार्ट करेंगे, फॉर विच आई एम गोना बिगिन बाय टेकिंग अ डायगोनल बैक सेक्शन. नाउ डायगोनल बैक सेक्शन जो हम लेंगे वो एक काफ़ी थिक सेक्शन रहेगा, बिकॉज इस टेक्निक में हम लोग हमारा फ्रेंच बालयाज एप्लीकेशन सेक्शन के सिर्फ सरफेस पे ही अप्लाई करेंगे. येस, वी आर गोइंग टू जस्ट अप्लाई द प्रोडक्ट ओनली ऑन द सरफेस एंड दैट इज व्हाट मेक्स इट क्विक एंड सिंपल फॉर ऑल ऑफ अस. सो वंस आई हैव माय डायगोनल बैक सेक्शन, आई एम गोइंग टू क्लिप द रेस्ट ऑफ माय हेयर अवे to create more ease in my application over here. Now section जो है वो आपको definitely एक solid tension और section को सही तरीके से elevate करके आपको hold करना है. And definitely for the lightning, I am going to use my new favorite product, which is the Blond Studio 9 with bonder inside. So product मैंने already यहाँ पे mix किया हुआ है and quickly I will show you how do we start with the application. So basic tips and tricks of doing a French balayage is going to be the same. Okay, we have seen Arun sharing a lot of tips and tricks with you. Soham has also shared a lot of tips and tricks with you. Keeping those things in mind, I am going to continue with my application. So section जो आपका रहेगा, you will have to pinch it together. And of course, आपका product जो है, it will just remain on the tip of your brush. And brush को surface के flat surface पे रख के आप अपना product build up करोगे. So you start vertically, flat brush to your surface, आप product को apply करोगे. And जैसे आपने आपका product आपके मिड सेक्शन पे बिल्डअप कर लिया, यू विल नाउ ग्रेजुअली स्टार्ट क्रिएटिंग अ 1 पॉइंट बालयाज. ओके, सो इसी प्रोडक्ट को हम धीरे से ऊपर की तरफ ग्रेजुअली बिल्ड करेंगे एंड प्रोडक्ट को सरफेस पे इवनली स्मूदन आउट करने के लिए आई एम एक्चुअली गोइंग टू बी यूजिंग माय फिंगर्स टू ब्रश इट अवे and create that smooth effect in my blend. जब भी आप बालयाज एप्लीकेशन करते हो, it has to be all about building the product on the section. So एक टाइम पे आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट अप्लाई नहीं कर सकते हो, but the thing over here for you all to keep in mind is that you have to keep building the product onto the section that you're working on. That way you will have a good saturation of product जिससे आपको एक desired undercoat या lightning hair के ऊपर आप easily achieve कर सकते हो. Now that I'm happy with the way I have saturated the product, I'm going to start saturating towards the mid and slowly coming towards the ends. Make sure ends तक आपका grip जो tension रहेगा of the section that you're holding is tight
and remaining the same, because the moment you leave your section loose, you might not be able to apply the product just on the surface. Now because हम product को सिर्फ surface पे apply कर रहे हैं, जो section नीचे के तरफ रहेगा, that automatically is creating the negative space to our overall application. So यही application अभी हमको पीछे की तरफ भी connect करना है. Why I am going to connect it at the back? One thing you all need to remember is that कि ये जो आपने gradual elevation product का जो create किया है, you have to connect it to the back as well. Again, the back section, while you're working, so while you're working on the back section, again, you will take a diagonal back and make sure कि आप front वाले section के साथ इसको connect कर रहे हो. Now let me show you how can we quickly connect it. Again, आपने एक thick section लिया, keeping in mind again कि आपका application वापस से सिर्फ surface पे ही होगा. So holding the section straight, flat to the surface brush, you start building the product. Okay, आपको यहाँ पे भी 1 point balayage ही create करना है, but you don't have to necessarily go very, very high. You just keep building the product so that you get a good amount of lift as you are desiring with your client. Gradually, आप product को mids to ends तक build करोगे and take the product saturation completely towards the tip. Here, while I'm using the Blond Studio 9, what I really enjoy about the product is that the texture. इसका जो texture है, it is a beautiful creamy texture. And what I enjoy the most is that it really helps to stick onto the hair. Okay, so while I have connected the section at the back as well, again I am going to repeat another application once again in the front. Again in the front, आप और एक diagonal back section लोगे. Clip the hair away so that you can work comfortably. And अगर आपका section बहुत ज़्यादा wide भी हो जाएगा, you can also alternately divide it into two to make your work easy and comfortable. When you're doing a balayage, it's not only about how you're applying. You need to also be comfortable, enjoy as you are doing the balayage for your client. So again, holding the section straight, elevation in control and the tension of your hair, you start building your product onto the hair. Remember, आपका जो application है, it will just be onto the surface and you gradually build your product all over. If you want that soft face framing, आप section को थोड़ा सा high elevation पे रख के आपका product build कर सकते हो to give you that brightness around the face. Now, while I am doing this application, which I'm going to continue towards the front and in perpendicular to the back as well, I would now like to call my colleague Deepak on stage, who is going to talk about various color combination which will help you in your global color to create an even,
hair color canvas before you begin with your balayage. So guys, if I may have Deepak on stage. So thank you, Anushka. Thank you everyone for joining us. So this is an amazing day. Lot of interesting techniques, right? So हम French balayage के बारे में बात कर रहे हैं. हमने techniques, आपको प्रदीप ने टेक्निक बताया, then सोहम ने बताया, now अनुष्का. So but important part क्या है? उसके साथ साथ global application. अब आप सोचेंगे global application वो तो हम सब करते आ रहे, but yes, you can also create the multi-tonal effect, the variation in the global. अब global के साथ साथ हमें ये समझना पड़ेगा, क्योंकि हम देखिए हम सबके फेवरेट कलर्स होते हैं, है कि नहीं है? मेरा भी है और आपका भी. किसी का 0.1 होता है, किसी का 0.2 होता है, किसी का 0.3 होता है, राइट? बट जब आपके पास क्लाइंट आता है तो वो किस एक्सपेक्टेशन के साथ आ रहा है आपके साथ? वो आ रहा है कि मुझे कुछ नया चाहिए, कुछ नया. सो हमारे पास मैजरल का बहुत बड़ा पैलेट है पीपल. सो लेट्स यूज ऑल दिस, लेट्स क्रिएट मल्टी टोनालिटी. जैसे कि आपने स्टेप बाय स्टेप में समझा, देखा, तो इसी के साथ मैं उसी को ऐड ऑन करते हुए कुछ करना चाहूंगा और बताना चाहूंगा. ओके, सो मल्टी टोनालिटी की बात करते समय हम दो कॉम्बिनेशंस, हम बहुत सारे कॉम्बिनेशंस की बात कर रहे हैं. ओके, सो आई विल स्टार्ट विद द कॉम्बिनेशन, बट बिफोर वी गो अहेड फॉर एनी कॉम्बिनेशन, हमें सबसे जरूरी क्या है? सबसे जरूरी है मेटल डीएक्स. सो किसी भी कॉम्बिनेशन पे या कोई भी कलरेशन, इनोवा कीजिए, मैजरल कीजिए, कोई भी आप कलरेशन करते हैं, प्री लाइटिंग कीजिए, यू यूज व्हाट? मेटल डीएक्स विदाउट फॉरगेटिंग. हमें उसको भूले बिना करना है. सो मेटल डीएक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूट्रलाइज करता है आपके बैड आइंस को, और ताकि आपका कलर बहुत अच्छे से आए, राइट? लंबा टिके, ब्रेकेज भी आपकी कंट्रोल होती है. तो ये सारी चीजें हैं, सही कलर आए उसके लिए आप मेटल डीएक्स को यूज करें. मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर मेटल डीएक्स, लेट्स स्टार्ट विद इट. मेटल डीएक्स के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? आपको पास से, बहुत पास से आपको स्प्रे नहीं करना है मेटल डीएक्स. ओके, सो इंपॉर्टेंट 10 to 15 इंचेस कैप, बिल्कुल पास से नहीं जाएंगे. 10 to 15 इंचेस कैप एंड देन ओनली स्प्रे. Comb it nicely, emulsify. That's it. Then we will go on for the next section. Metal DX. So मैं combinations की बात कर रहा था. Combinations में हमने बहुत सारे morning से combinations देखे. Combination number 1, combination 2. तो मैं इसी अकॉर्डिंग, बिकॉज आपने फर्स्ट इंफॉर्मेशन में सुना होगा कि हम कॉम्बिनेशंस को कैसे डिसाइड करते हैं. हम कॉम्बिनेशन डिसाइड करते हैं स्टाइल माय हेयर प्रो. सो वो आपका डिजिटल स्पेस है जहां पर आप कंसल्टेशन कर सकते हो और इजीली डिसाइड कर सकते हो कि क्या कंपैटिबल है, कौन सा शेड किसके साथ जाएगा. ओके, सो आई विल स्टार्ट विद माय एप्लीकेशन कि हम कौन सा कॉम्बिनेशन के साथ अभी काम करने जा रहे हैं. ओके, सो आई विल स्टार्ट विद माय हॉरिजॉन्टल सेक्शन. हम हॉरिजॉन्टल सेक्शन में बार बार इस चीज को समझते हैं. वी नो दैट हम 1 सेंटीमीटर और हाफ सेंटीमीटर और हाफ डायामीटर ऑफ टेल कॉम्ब, उसको लेके अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी हम सेक्शन को लेते हैं. हॉरिजॉन्टल सेक्शन मेरा प्रोडक्ट ऑलरेडी मैं मिक्स किया है, तो यहां पर मैं दो कॉम्बिनेशन के ऊपर बात करूंगा. फर्स्ट, आई एम यूजिंग 6.8 विद 30 वॉल्यूम. ओके, कभी भी 6.8 मटेरियल विद 30 वॉल्यूम, कभी भी आप ये प्रोडक्ट रूट्स के पास से स्टार्ट नहीं करेंगे. अगेन यू गो लिटिल डाउन, गो अप, दैट्स इट. तो सॉफ्टनेस प्लस इसके साथ क्या होता है, आपको कभी भी लिफ्ट, कभी भी आपका ग्लो नहीं होगा. क्यों? कभी अगर हम बहुत ज़्यादा रूट्स के पास प्रोडक्ट लगा देते हैं तो आप देखेंगे कि वो रूट ग्लो भी हो जाता है. नॉट टू मच ऑफ कोम्बिंग, सिंपल एप्लीकेशन, फाइन एंड स्टार्ट. तो मेरा पहला एप्लीकेशन क्या है? फर्स्ट सेक्शन ऑफ एप्लीकेशन 6.8 मटेरियल विद 30 वॉल्यूम. नाउ कॉम्बिनेशन, जैसे हम ऑल्टरनेट कॉम्बिनेशंस की बात कर रहे हैं. आप सेकेंड सेक्शन, हॉरिजॉन्टल सेक्शन, आई विल टेक आउट. यहां पर जो मेरा सेकेंड सेक्शन है, जो उसके ऊपर है, उसको मैंने लिया है सेम लेवल पे 6.13 मटेरियल, अगेन विथ 30 वॉल्यूम. प्रोडक्ट थोड़ा लिया है, बहुत ज्यादा नहीं. रूट्स के पास एप्लीकेशन नहीं करना है, आप एप्लीकेशन थोड़ा नीचे से स्टार्ट कर सकते हैं. ऊपर अगर आप डायरेक्टली कभी यहां लगाएंगे तो क्या होता है, हीट
रूट्स के पास हीट बैंड है जिससे कि आपका कलर ज़्यादा या ग्लो दिखता है. अप्लाई प्रोडक्ट, आइडियली slip it down, do not do criss-cross, simply push it down, apply. कोशिश करें उसको बहुत ज़्यादा ज़ोर से. कभी कभी क्या होता है हम बार बार उसको एप्लीकेट इमल्सिफाई करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा इमल्सिफिकेशन नहीं करना है. गुड इमल्सिफिकेशन, जॉब डन. नेक्स्ट सेक्शन अगेन. तो मैंने क्या किया, फर्स्ट एप्लीकेशन में फर्स्ट मेरा जो सेक्शन है 6.8 यूज किया. सेकेंड सेक्शन मैंने क्या किया, 6.13 सेम लेवल पे यूज किया. अब मेरा नेक्स्ट सेक्शन भी 6.8 होगा. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आई वुड लाइक टू ऐड हियर इज, जिस सेक्शन जो आपका पहला सेक्शन है जो आपने स्टार्ट किया है वही आपका टॉप पे होगा. ओके, सो नाउ माय अनदर सेक्शन इज 6.8. सो फॉर एनीथिंग यू वुड लाइक टू ऐड अनुष्का? Yes, of course. So, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो is that I have already completed my front section and connected it to the back as well. जैसे आप ये same application पूरे side पे complete करोगे, you will be left with a triangular section at the top. So, let me quickly show you कि जैसे आपका ये पूरा complete हो जाएगा and when you are left with the last bit of the hair, how do you actually connect the entire balayage? So for this, आप ये full triangular section hold करोगे, you will keep it together, and यहाँ पे हम सिर्फ एक single point balayage नहीं create करेंगे, बल्कि will create a 2-point balayage on both the sides. So again, building the product from the mid of the section, gradually going towards the side. लेकिन यहाँ पे जो आप प्रोडक्ट साइड पे बिल्डअप करोगे, यू विल डू इट ऑन बोथ एंड्स. Using your fingers, make sure you're blending and smoothening the product onto the surface, ताकि यहाँ पे आपका प्रोडक्ट का कोई पैचीनेस ना रहे. You are getting a nice, clean, even undercoat and lift onto the hair. Then gradually building your product towards the end. So likewise, I have completed my application on this side. So गाइस, जैसे मैंने आपको समझाया, जैसे मैंने आपको बताया कि हम कॉम्बिनेशन सेट जैसे 6.8 एंड 6 इसी तरीके से आप बहुत सारे कॉम्बिनेशंस को हेल्प ले सकते हो. कहाँ से? स्टाइल माय हेयर प्रो ऐप. ओके, बिकॉज एवरी डे योर क्लाइंट कमिंग टू यू एंड आस्किंग समथिंग इन अनदर. दिस इज योर ट्रेडमार्क. ये आप ट्रेडमार्क सेट कर सकते हैं. डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के साथ आप यूज करके क्लाइंट के साथ इस फेस्टिव सीजन को बहुत अच्छा सैलून के बिजनेस के लिए कर सकते हैं. ओके, सो ये मेरा ग्लोबल एप्लीकेशन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है. आप बालियाज देख रहे हैं, देन वी हैव समथिंग इन अदर. तो उसके साथ साथ हम समझेंगे कि और क्या क्या कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, जैसे कि हमने बहुत सारी यूज किए. फॉर एग्जांपल, आप अगर 7.8 है, यू कैन टेक इन कॉम्बिनेशन विद 7.1. ओके, यू कैन सी इन योर स्क्रीन, आप अपनी स्क्रीन में देख रहे होंगे, वी हैव डिफरेंट कॉम्बिनेशंस अवेलेबल देयर. तो ये आपको मल्टी टोनल इफेक्ट देगा, आपका डायमेंशनल इफेक्ट देगा. इससे आपको बहुत अच्छा लुक क्रिएट होता है, टू क्रिएट अ न्यू लुक. ओके, अब इसके साथ साथ जैसे कि हम ग्लोबल की बात किया, लेट्स टॉक अबाउट टोनिंग. फॉर दैट आई वुड लाइक टू गेट माई डॉली हेड. बट कभी भी जब हम ग्लोबल कर लेते हैं, व्हाट नेक्स्ट? योर शैम्पू. सो शैम्पू विथ मेटल DX. अच्छे से मेटल DX शैम्पू करना है और उसके बाद ड्राई करना है, एंड देन वी विल टॉक अबाउट टोनिंग. सो समथिंग टू ऐड, Anushka, for this? So yes, thank you Deepak for amazing combinations that you shared with Thank the you. global. Guys, if you see in this, I have already completed my front, side and the back section of my French balayage application. This technique, if executed rightly, will definitely help you create beautiful French balayage for your clients in a quick amount of time in salons. And definitely, once you've achieved your
undercoat. Of course, the toning, glossing is really, really important to finish and add that personalized touch and result to the hair. So Deepak over here has got another dolly hair, and he's going to quickly talk about how we are going to create and by mixing two different shades and create a personalized toner glossing effect. So guys, first step of French balayage is seamless lighting. Now what next? Perfect toning. We've been listening this. So toning is very, very important. क्यों? जब हम प्री लाइटनिंग करते हैं, कितनी बार आपने देखा होगा अंडरकोट आपका वार्म होता है, राइट? उसको न्यूट्रलाइज करना पड़ता है, तो इस चीज के लिए टोनिंग इंपॉर्टेंट है. सो वी आर गेटिंग समथिंग न्यू हियर टुडे. सो गाइस स्टे ट्यून एंड सी. सो हियर टोनिंग में मैं क्या करने वाला हूं? आई विल फर्स्ट टेक, यहां पे भी हम कॉम्बिनेशन शेड को यूज करेंगे. Okay, so combination shade I will talk about first. I will take out my section. My section will be diagonal back. I will take a diagonal back section. Okay, clip. I will quickly clip it up. Okay, so यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? टोनिंग. टोनिंग में हम देखते हैं हमने कलर लगाया, emulsify, job done. But here we have a trick. हम टोनिंग से कैसे मल्टी डायमेंशनल इफेक्ट या एक डायरेक्शनल इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं? So here what we have done is we have put a product. जो मैं प्रोडक्ट पहले रूट्स के पास लगाऊंगा, उसमें दिया लाइट, आवर फेवरेट दिया लाइट 6.1 विद 8.1, हमने इस दोनों को मिक्स किया है. अब आप कहेंगे मिक्स करने का मतलब, हमने 6.1 और 8.1 को एक ही बोल के अंदर यूज किया है. okay? अब 6.1 का क्वांटिटी क्या है? 1/4 कम रहेगा, 8.1 3/4 ज्यादा रहेगा. अगर मैं एक ट्यूब यूज कर रहा हूं तो 3/4 एंड 1/4 कैसे होगा? 3/4 मतलब 37.5 ग्राम्स अगर मेरा एक ट्यूब यूज हो रहा है, और अगर मैंने 1/4 यूज किया तो 12.5 ग्राम्स. सो आई विल फर्स्ट अप्लाई this 6.1 and 8.1 combination on the roots. Understand people, we will not flap the product, बहुत ज़्यादा product flap नहीं करेंगे. We will apply product, but I'm not going exactly horizontally. मैं एकदम horizontally नहीं जा रहा हूँ. A little, diagonal brush to create that directional effect in sync with Anushka's balayage. And now apply a little, not with very flat or very horizontal brush, very, very softly apply it. And here is the trick. The trick is we will comb it, but just scratch it in a way that we want to create that direction. So this is how we will create our directional effect through toning. Toning के through हम करते हैं, जिसमें हम roots के पास जाके उसको use करेंगे. So this is how we will create all our sections one by one. तो हम क्या करेंगे? पहले these dark pieces we will apply. So I will take one more section and let's see one more time. So this is my section, diagonal back मतलब direction towards the back, nape area की तरफ. I will take not too much of product, थोड़ा product लिया, and I will start. I'm not going direct horizontally. So I will create a little higher point here, and this will be my lower point. My comb, I will simply scratch it down, not horizontally, like this, इस तरीके. So what I'm doing, मैं क्या कर रहा हूँ इसमें? What I will achieve? So this here, what I will achieve? A root melt, a root shadow. So the darker color getting blended to the lighter pieces. इस तरीके से मेरे सारे sections आप roots के पास 6.1 दिया लाइट with 8.1 दिया लाइट combinations के साथ one by one करेंगे. First आप application को complete करेंगे, and then अब क्या करेंगे हम? We have another combination. तो ये तो हो गया roots का. What about middle ends to ends? So we have our beautiful shade again. We have used here 8.1 Thea light with 9.11. Again the same combination, 3/4 and 1/4. Okay, 3/4 अगर आप full tube use करते हो, 9.11 3/4 इसका मतलब 37.5 grams, 37.5 grams, और 1/4 मतलब
12.5 grams. टोटल करेंगे 50 grams of product. हम डेवलपर के साथ मिक्स करेंगे. डेवलपर 9 वॉल्यूम दिया एक्टिवेटर. इसको मैजिरल के साथ यूज नहीं करना है. So we will simply mix it and apply. Emulsify. When we emulsify, there are a lot of time we do combing. Do not comb too much. Simply comb, blend it, and leave it. So this is how we will create all multi-tonality through toning. Okay? So I'm sure you guys are excited to see our final results. For that, I would like to call my model on stage. Thank you. You can see our beautiful model standing here. So exactly we have done the same balayage which Anushka has done it. Anushka, can you elaborate? Oh yes. So guys, यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, the model has. Okay. Yeah. Thank you. Thank you. So that's not it. We have one more model. So हमने finish look किया है, तो हमने भी बहुत सारे looks को किया है. So एक और finish look है हमारे पास. For that, I would like to call my model Akansha on stage. So guys, here we have Akansha, and again a beautiful French balayage look created for her as well. Beautiful blending, the darker pieces getting blended to the lighter one. You see? Shine. Now. Thank you, Akansha. So thank you guys. So I hope you liked our all techniques and looks, and we are sure that you will do wonders in this festive season in your salon. But that's not it. To take out further in this session, I would like to call my colleague on stage. Thank you everybody for joining us today. I hope you had a great time learning different ways of doing French balayage with us, and most importantly, the superstar product in your salon, Blond Studio 9 with Bonder inside, a game changer in every aspect. So do remember to click on the like button if you liked what you watched, and please send in your queries. And we did ask you a question. The best answer would be receiving a beautiful styling product range from L'Oreal Professional. Remember to follow us on our YouTube channel for live education, L'Oreal Professional India. Do follow us on our Insta page, L'Oreal Pro _education _India, and hashtag your amazing works on L'Oreal Prof India, French Balayage India, and L'Oreal Prof West 1. And remember, do come to your academies to do French Balayage Play Day hands-on to experience the beauty of the product and learning new ways of doing French Balayage. But remember, before you come, you must complete your online training through our Access in app, your new friend and partner in online education from L'Oreal Professional. So thank you very much for joining us today. I hope to see you soon with the next edition of our color creations. So until then, happy balayaging. Thank you so much. Hair layers.